आभ्या 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 ठाकुर. Okay. So last class we did chapter number 3, kinds of simple sentence. I hope you have completed the exercise and submitted for me to check. मैम. यस मैम. यस मैम. इसका नंबर मिला. क्या? यस मैम. मैम मेरे को ना दक्ष का नंबर नहीं मिला. दक्ष का नंबर नहीं मिला आपको? एक काम करना बेटा. यस मैम. चैप्टर नंबर, हाँ एक काम करना, ग्रुप है ना जो हम लोग का होमवर्क ग्रुप, यस मैम. उसमें आप हो ना? यस मैम. हाँ उसमें डाल देना. यस मैम. ठीक है. Okay. ओके मैम. So now we will start with word classes, chapter number 4. So हमें पता है the words are made up of letter and each word has some meaning, and we also know that sentences are made up of words. So these words, depending on their role, have different function. These categories are known as parts of speech. तो हमें पता है एक सेंटेंस बना है वर्ड्स से, वर्ड्स बना है लेटर्स से. तो ये जो वर्ड्स होते हैं उनका डिफरेंट जॉब्स होता है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द जॉब्स, words has been classified into 9 different categories known as parts of speech. First is noun. A noun is the name of person, place or thing. कोई भी नाम, जगह या कोई भी चीज नाउन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, मदर टेरेसा वॉज एन एंजल ऑफ मर्सी. पेज नंबर 12. हेलो. Got me? Actually, I'm taking class right now. So just tap the link. लिंक को टैप करिए और वो खुल जाएगा. So Mother Teresa was an angel of mercy. Mother Teresa, here in this sentence, Mother Teresa, angel and mercy, 3 are the nouns here. ठीक है, क्लियर है सभी को? What is a noun? यस मैम. Now यस मैम. next pronoun. Pronoun is a word which is used instead of a noun to avoid its repetition. ठीक है. For example, जैसे I am saying good morning Hari, Mr. Hari, how are you Mr. Hari? तो उसको मिस्टर हरी को बार बार ना रिपीट करके I use how are you. So here you is a pronoun. Understood? समझ में आया? For example, I'm saying Arya, please go to the ice cream stand. And please Arya, buy some ice cream for all of us. तो इसको आर्या को मैं रिपीट ना करके आर्या प्लीज गो टू आइसक्रीम स्टैंड एंड यू विल बाय आइसक्रीम फॉर ऑल ऑफ अस. Like this I will say. Understood everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Next is determiners. Determiners are the words that decide or limit or determine a noun that follows. They are small words used before noun to tell which one, how many or whose. For example, 50 passengers can be seated in this bus.
तो ये बताने के लिए कि कितने लोग क्या हैं, कहाँ पे हैं, ये सब बताने के लिए हम लोग डिटरमाइनर्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in the sentence 50 passengers can be seated in this bus. 50, this, ये सारे डिटरमाइनर हैं. ठीक. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है सभी को? नाउन, प्रोनाउन और डिटरमाइनर क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Next is adjective. An adjective is a word that adds meaning of a noun or a pronoun. For example, he is an honest man. वो कैसा आदमी है? वो एक ईमानदार आदमी है. तो जो भी वर्ड किसी नाउन की क्वालिटी बताए, that is known as adjectives. For example, I am a tall girl. तो here what will be the adjective? Tall. 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 हाँ, what will be the adjective here, Abhya? Abhya, Yes, ma'am. what will be the adjective in the set? No, not Arya, Abhya. Abhya Thakur. Yes, ma'am. What will be the adjective in the sentence, I am a tall girl? Ma'am, tall. Tall, very good, very good. Now next is a verb is a word that states an action, fact or happening. For example, a rose gives sweet smell. तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है या फैक्ट क्या है? gives. gives. I am running in a marathon. तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? Running. Running. Very good. Very good. Supriya, what is the action in the sentence? I am running a marathon. Running. Running. Very good. Surya? Surya? Yes, ma'am. What is the verb in the word I am writing a letter? What is the Writing. verb? Writing. Very good. Very good. Okay. Now we have adverbs. An adverb is a word which adds to the meaning of the verb. अब जैसे कि एडजेक्टिव नाउन का क्वालिटी बताता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है. जैसे कि he wrote neatly. ठीक है, इसमें वर्ब क्या है? नीटली. लेकिन यहाँ पे वर्ब है wrote और यहाँ पे एडवर्ब क्या हो जाएगा? नीटली. वो साफ लिखी या फिर साफ लिखा या फिर वो साफ लिख रही थी. तो द साफ वर्ड इज द क्लियर और नीटली वर्ड इज द एडवर्ब. ठीक है. सो आर्या, what will be the adverb in the sentence? What will be the adverb in the sentence? He is running. He is running fast. 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 Very good. Supriya, what will be the adverb in the sentence? He is writing clearly. 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 Very good. Very good. Now next is preposition. Just a second. Just a second.
Okay, we were doing preposition. Now preposition means pre plus position. Now it means taking up a position before something. A preposition is a word used before a noun or pronoun. It shows its relation with some other noun or pronoun. For example, there are many varieties of flower in our garden. तो यहाँ पे नाउन क्या क्या है? फ्लावर्स और गार्डन. ठीक, तो दो नाउन को जोड़ने. व्हाट? पेज नंबर 13. Page number. Yes, got me. I know that. Page number 13. Yes, ma'am. Okay. There are many varieties of flowers in our garden. तो इस जगह पे दो नाउन्स हैं, फ्लावर और गार्डन. तो दोनों को जोड़ने के लिए वी हैव यूज्ड इन. तो दैट इन इज नोन एज प्रीपोजिशन. क्लियर है? Yes, ma'am. The cat is on the table. The cat is on the table. यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? आप on. Very good. Very good. Very good बेटा. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. हाँ. Next is क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Now next we will see conjunction. Conjunction means joining together. ठीक है? अब conjunction is a word used to join words, phrases, Morning, ma'am. sentences. Good morning. For example, leaves and flower grows on trees. तो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो चीज यूज करते हैं दैट इज नोन एज कंजंक्शन. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सूर्या, प्राची एंड आर्या आर सिटिंग टुगेदर. यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? And. Ma'am, and. And. Very good. Very good. अब है लास्ट, interjunction. Interjunction is a word used to show sudden feelings such as joy, sorrow, love, fear, dislike. Exclamatory sentences की तरह interjunction भी exclamation mark जहां आ जाए that is known as interjunction. जैसे कि alas, he is dead. Oh, what a shame. तो ये जो exclamation mark आ रहा है, oh, what a shame. So this is known as interjunction. They show sudden feelings such as joy, sorrow, love, fear, dislike. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.